हेलो। यस सर। हाँ। तो तुम लोग को हम वो होरेस का आर्स पोएटिका ना बता रहे थे। यस सर। कहाँ तक लिखाए थे जरा बताओ। अभी थोड़ा और है, इसको लिखा देंगे हो जाएगा काम। ये वाला पैराग्राफ दिखा रहे थे सर। द चीफ क्वालिटी वेयर होरेस रिगार्डेड एज विच फंडामेंटल टू विच ऑल विच 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 होरेस रिगार्डेड एज फंडामेंटल टू ऑल राइट्स। टू। ठीक है। हाँ, फिर दिस इसमें इन्वॉल्व द मेंटल तीन लाइन दिखाए इनफैक्ट थे, कंसिस्टेंसी से लिखाना है। कंसिस्टेंसी, इनर कंसिस्टेंसी। नहीं, यहाँ तक फॉर द हुआ था। फॉर द अटेनमेंट ऑफ दिस होरेस लेड डाउन सर्टेन क्लियर इंस्ट्रक्शन। यहाँ तक लिखवाए थे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, अच्छा ठीक है, यहाँ तक लिखवाए थे। यस सर। चल ठीक है, लिखो आगे। क्वेश्चन के बाद कंसिस्टेंसी कैन बी एक्वायर्ड। कंसिस्टेंसी कैन बी एक्वायर्ड, लिख रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है। कंसिस्टेंसी कैन बी एक्वायर्ड consistency can be acquired by observing the rules of the unities, and by creating within a well defined सर क्रिएटिंग के बाद within within a well defined framework. हो गया, फुल स्टॉप। ए प्ले, अरे उसका वो कौन है ये, बुलबुल कुमार, अपना ऑडियो बंद करो तुम। हाँ। ए प्ले, एग्जाम्पल, ए प्ले के बाद कॉमा, एग्जाम्पल शुड प्लंज straight into the action, comma, be limited to 5 acts, comma, neither more nor less, semicolon, बी लिमिटेड टू 5 5 acts, acts, 5 acts, comma, neither more nor less, semicolon, the unities of time, comma, place and action must be observed, semicolon, not more than 3 characters should appear at the same time. Semicolon, the characters should be recognizable types.
should be recognizable types, semicolon, scenes of horror should be avoided, full stop. These rules make for a well knit, WELL-KNIT, well knit play. Full stop, paragraph change. Horace laid LAID, Horace laid great stress on decorum as a guiding principle in poetic art. Full stop. Decorum is a quality more inward. Sir, decorum is equality. Is a quality more inward, comma, being a part of the intrinsic nature of things. Being a part of the intrinsic nature of things. Full stop. It rests on an established order. It rests on an established order. Full stop. Aristotle goes deeper because his attitude is more objective. Full stop. But Horace is bound by social conventions. Dash the taste and the culture of the aristocratic class of his day. He has his eye on the audience and is limited by its limitations. Full stop. Sometimes, comma, of course, comma, it almost seems
that he really means. It also seems that he really means by an audience, comma, those fitted by FITTED, those fitted by literary standards, by literary standards, semicolon, by literary standards, double inverted comma में, never mind what the majority think, semicolon, and a fit audience, comma, although it be limited in number, So, and a fit audience. and a fit audience, comma, although it be limited in number, full stop, double inverted comma closed. Decorum is best expressed in diction, which should be noble and lofty, full stop. At the same time, Horace enters a strong plea for the introduction of So, spelling of plea is PLEA. for the introduction of archaic, ARCHAIC, and new words as not inconsistent with the elegances of language, comma, for decorum does not go against the invention of new linguistic modes, full stop. It may be observed that in actual practice, comma, Horace allowed himself
Horace allowed himself to take liberties which his theory did not countenance. Full stop. This gives point to critical comments. Full stop. Sainsbury, S capital Sainsbury, a great critic of his time, comma के बाद Sainsbury, comma a great critic of his time says that if Horace had followed his own Ars Poetica, So says says that if Horace had followed his own Ars Poetica, single inverted comma, his own Ars Poetica, Sir, Ars spelling. ARS, ए कैपिटल से ARS और पोएटिका में POETICA, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा रखना है. Ars Poetica, comma, he would not have risen above mediocrity, comma, for Horace in his treatise, TREATISE, in his treatise, a stressed art, more than genius. Full stop, paragraph change. What Horace strives after in his theory is to lay down the conditions, single inverted comma, is to lay down the conditions that would help one to achieve perfection. Perfection में P capital से देना. To achieve perfection, hyphen, the idol, IDOL, idol worshipped by the neoclassicists. Full stop. The Ars Poetica, single inverted comma में Ars Poetica लिखना. The Ars Poetica therefore may be looked as a practical guide to the attainment of perfection
in literary form and style. सर एक बार फिर से बोलिएगा. Practical The guide art, to he looked upon, be looked upon as a practical guide to the attainment, attainment, attainment of perfection in literary form and style. Full stop. He also advised poets not to go beyond his power and to select his GENRE, इसको जां बोलते हैं. Select his जां according to his capacity, to avoid single inverted comma में purple patches that do not harmonize with the tone and style of the entire poem, and to try to achieve an artistic whole. Full stop, paragraph change, last para hai. For a long time, Horace exercised a greater influence than Aristotle. Horace may be said to have been the literary dictator. Sir, Horace, maybe? May be said to have been the literary dictator of the Renaissance. Renaissance में R कैपिटल लिखना, RENAISSANCE, Renaissance. Full stop. His Ars Poetica, inverted comma लिखना, his Ars Poetica was looked upon as the Latin version, Latin में L कैपिटल से, Latin version of Aristotle full stop. It was realized later on that Aristotle's ideas about the relation between form and matter
were more fundamental than those of Horace. Sir, between form and matter. Between form and matter were more fundamental than those of Horace, because Aristotle was more objective and philosophical in his treatment. हो गया? अब तुम Yes, sir. लोग आज जो लिखा है उसको पढ़ो, ठीक है? और पढ़ के हमको बताओ कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है? फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलो। हाँ हेलो। यस इसमें सर। फोकस करने वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो है तुम्हारा ये कि ए प्ले शुड प्लंज स्ट्रेट इनटू द एक्शन, ठीक है? बी लिमिटेड टू 5 एक्ट्स। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि ड्रामा शुरू हो जाए, ठीक है, और तुरंत एक्शन शुरू हो जाए। क्लियर? और यस सर। ड्रामा मस्ट एंड ओनली इन 5 एक्ट्स, ठीक है? ड्रामा को कितना एक्ट में खत्म हो जाना है? 5 एक्ट्स में, ठीक है? तो 5 एक्ट से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? It should not be a drama. It should not be. The length of drama will be more. हाँ, तब क्या होगा? What will be the effect? देखो, अभी फिल्म जाते हो तुम लोग, तो मोस्टली Yes, sir. 2.5 से 3 घंटे की फिल्म होती है, Yes, sir. होती है ना? लेकिन अगर 6 घंटे की फिल्म होनी शुरू हो जाए तब क्या होगा? जस्ट इमेजिन, यू विल बोर बिकम होना बोर्ड, स्टार्ट होगा। ठीक है? हाँ, मोनोटोनी विल स्टार्ट, ठीक है? You will be bored and you will begin to dislike this length, ठीक है? तो in the same way, if the drama exceeds from 5 acts, what will happen? The audience will become bored, ठीक है? And they will become disinterested. कोई मजा उनको उसमें नहीं आएगा, ठीक ना? इसीलिए it should be limited only to 5 acts. क्लियर हुआ? Yes, So sir. this is the guideline, ठीक है, prescribed by Horace. Number 1. Number 2 क्या है? The unities of time, place and action. ये 3 यूनिटी समझता है तुम लोग? These 3 unities, ठीक है, are the main points, ठीक है, influencing point of each and every drama. Every literary critic, ठीक है, has tried to define it. These 3 unities must be observed, especially in classical dramas and till the 17th century, ठीक है ना? It was observed by one and all, ठीक है? Then after, ठीक है, we have seen certain violation, but more or less, in great dramatists you see the observation of these 3 things. क्या है? Unity of
क्या? टाइम, प्लेस एंड एक्शन। टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम से समझते हो कि एक ही टाइम में सब चीज हो जाने का है। ठीक है, 24 घंटा का टाइम है। ठीक है, उसी टाइम फ्रेमवर्क में आपको ड्रामा क्लियर कर लेना है। ठीक है, उससे ज्यादा का टाइम नहीं देने का है। ठीक है, अब मान लिया कि ड्रामा को आप जो है विद इन 24 आवर से आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो फिर गड़बड़ है। इसी टाइम फ्रेमवर्क में आपको कर लेना है, नहीं तो फिर वही बोर्डम शुरू हो जाएगा। पब्लिक के पास जो है कि समय का हमेशा अभाव रहता है, चाहे पहले था या बाद में था। ठीक है, फिर है प्लेस। एक ही प्लेस में ड्रामा होना चाहिए। मतलब कि ड्रामा अगर हम बिहार शरीफ में शुरू कर रहे हैं ड्रामाज के एक्शंस, ठीक है, तो वे प्लेस यही सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर उधर होता है, आप कभी चले जाइएगा स्विट्जरलैंड, कभी चलेगा मुंबई, कभी लंदन। ठीक है, और वहां जाके ड्रामा शुरू कीजिएगा। हाँ, और वहां के अपने कैरेक्टर्स को वहां ले ले जा कर करके आप ये कीजिएगा, तो फिर उसका इफेक्ट जो है ऑडियंस पे नहीं पड़ेगा। प्लेस जहां चेंज हुआ तो इफेक्ट भी गायब। क्लियर? तो ये ड्रामा के इफेक्टिव होने के लिए जरूरी है कि दर्शकों को ज्यादा आप मत घुमाइए। ठीक है, जगह को लिमिट कीजिए, 1 और 2। हाँ, प्लेस शुड बी गिवन प्रायोरिटी। अब शेक्सपियर का जितना ड्रामा है, ठीक है, या और भी जो ड्रामा लिखे गए, मार्लो ने लिखा, वेबस्टर ने लिखा, या जिसने भी लिखा, ठीक है, आप देखिएगा कि देयर इज ए सेंट्रल प्लेस। इवन की कॉमेडीज, ये शेरिडन के हो, गोल्ड स्मिथ के हो, किसी को भी हो, ठीक है, सब लोगों ने यही किया, दे लिमिटेड द प्लेस इवन इन ट्रेजेडीज एंड इवन इन कॉमेडीज। ठीक है, इसलिए सो दैट द इफेक्ट और द इन्फ्लुएंस मस्ट बी ऑब्जर्व एंड इट मस्ट इन्फ्लुएंस ऑल द ऑडियंसेज। अब आप 4 जगह 10 जगह प्लेस में, यहाँ एक्ट मान लिया कि शुरू हुआ लंदन में, दूसरा एक्ट पेरिस में, तीसरा एक्ट जो है स्विट्जरलैंड में, पांचवा एक्ट इंडिया में के एटमॉस्फेयर में आएगा या जगह पे आएगा, तो दर्शक जो है बहुत सारे क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। सेटिंग एक ही रहने चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। और एक्शन में भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्शन में उतार चढ़ाव से मतलब क्या है, ए किंग मस्ट ऑलवेज बी सीन इन द रोल ऑफ किंग, ए क्लाउन मस्ट बी सीन इन द रोल ऑफ क्लाउन, एंड ए विलेन ऑल्सो मस्ट बी सीन लाइक दैट। ठीक है, अब रावण जो है शुरू में सीता को ले गया, इसके बाद में वो उतना सीरियस नहीं रह के कॉमेडी के रोल में आ गया। राम जी जो है दूसरे रोल में चले आए। किंग लियर जो है देखो शुरू से अंत तक वो लगभग एक ही ये में रह गया। इवन व्हेन ही वाज नॉट accepted by his daughters, even when he was thrown out from the houses of his daughters, ठीक है, he never accepted that he is crownless। ठीक है, हमेशा वो बूस्ट करते रहा, यस आई एम द किंग। तो लास्ट में बेचारा कुछ दिन समय ऐसी करता है, ठीक है, कि उसकी स्थिति रियली में है क्या। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी मस्ट बी मेंटेन्ड। अब उसकी 2 बेटियां हैं, दे रिमेन्ड द सेम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। कोर्डेलिया, शी रिमेन्ड द सेम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। है कि नहीं है, बताओ? यस सर। तो ड्रामा के जितने कैरेक्टर्स हैं, दे मस्ट क्या, कंटिन्यू द सेम एक्शन। ठीक है, देर इज ए लिटिल रूम फॉर द चेंज, एंड द चेंज क्या, इफ एनी, इट
for the hero, not for the villain. Clear na? And not meant for the other characters. Fool है, Kent है, Gloucester है, ठीक है. They remain the same from beginning to end. Clear हुआ? This is necessary to grip the attention of the audiences and to sustain continuity in action and in realization of certain facts and figures. Clear हुआ? So these three unities are known as classical unities. ठीक है. In modern dramas, these unities you cannot find. ठीक है. But in many dramas, you will find this unity being observed by the dramatist. तो होरेस ने कहा, if you observe these unities, ठीक है, well, you can be a good dramatist. And this is essential part of having greatness in literary art. Clear? फिर कहता है, not more than 3 characters should appear at the same time. कहा उसने कि ड्रामा में ज्यादा कैरेक्टर एक बार स्टेज पर नहीं होना चाहिए. ठीक है. You see the conversation, the action or the interplay of the characters. ठीक है. And only 3 characters should be there at one time on the stage. इसलिए कि ज्यादा कैरेक्टर रहेंगे तो कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाता है. कौन क्या बोला, नहीं बोला, किसका क्या रिएक्शन हुआ, ही हुआ, नहीं हुआ, पता नहीं चलता है. ये क्लासिकल क्या है, फॉर्मूला है. द कैरेक्टर शुड बी रिकॉग्नाइजेबल टाइप. अब क्या है, एवरी कैरेक्टर शुड हैव टिपिकल कैरेक्टर. ठीक है. कॉर्डेलिया है तो सी इज टिपिकल. टिपिकल इन द सेंस कि सी इज वेरी ऑनेस्ट, सी इज वेरी नोबल. उसकी बहन दोनों जो है टिपिकल है, बिकॉज दे आर विलेन लाइक, दे आर विकेट. ठीक है. फूल है, केंट है. ठीक है. आप देखिए क्या कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर should possess certain exceptional quality. ठीक है. कि मिस्टर ए में जो है वो बी में नहीं है, बी में जो सी में नहीं है, डी जो है वो सबसे अलग है. ठीक है. just to create variety. ठीक है ना, among the characters. ये किस लिए है? so that the audience, the spectator could get maximum pleasure and entertainment. एक ही टाइप से तो बोर हो जाएगा आदमी. ये तो यही है, ये तो यही है, ये तो इसमें तो कोई मजा नहीं. ठीक है. सो वेराइटी गिव्स यू क्या, सस्टेनेबल एंटरटेनमेंट. तो इसलिए सबका होना चाहिए. ठीक है. रिकॉग्नाइज कीजिए कि हाँ, यस, ये, ओ यस, दिस इज ओथेलो, ओ दिस इज डेस्डिमोना, ओ दिस इज यागो, ओ दिस इज ओलिविया. ठीक है. एवरी कैरेक्टर, ठीक है, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली फ्रॉम हिज और हर ओन क्या, टिपिकल कैरेक्टर, टिपिकल पर्सनालिटी. सब एक टाइप का हो जाएगा तो ड्रामा में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. वो इसलिए कि ए ड्रामा मस्ट अपीयर लाइफ लाइक एज द कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है. सो डू यू थिंक दैट इवन इन योर नेबरहुड people are same? Even your family members are same? Certainly not. ठीक है. They have different type of choices, different type of speech, different type of understanding, different type of feeling and different type of taste. Clear na? So this variety, recognizable variety, ठीक है, should also be present on the stage. Clear हुआ? ये कहता है कि सीन्स ऑफ हॉरर, ठीक है, शुड बी अवॉइडेड. तो आप लोगों ने देखा होगा कि शुरू में बहुत भूत पिचास, अभी भी नागिन का, पिचासीन का, तो कुंची कुंची का सीरियल लेते रहता है. ठीक है. एक बार तो इतना मने होने लगा कि मने पूछो नहीं, खाली सीरियल उसी से रंगाइले रहता था. ठीक है. नारी है,
तो उसमें कुछ भूत घुस गया, तो पिशाच घुस गया, तो नाग ऐसे हो गया, तो क्या दिव्य शक्ति घुस गई, फुस गई, क्या होते रहता है। ठीक है, तो ये क्या, ये हॉरर है। तो हॉरर, इफ यू इंट्रोड्यूस हॉरिबल थिंग्स, जैसे कि द टेम्पेस्ट में है, जैसे कि गोथिक जितने ड्रामाज हैं या वेबस्टर के ड्रामाज है, उसमें हॉरर है। या फिर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो का ट्रेजेडी है, ठीक है, जिसमें मेफिस्टोफेलिस, डॉक्टर फॉस्टस है, ठीक है। तो इट क्रिएट्स वेरी फियरफुल सिचुएशन। तो ये होरेस महोदय कहते हैं कि यस वी शुड अवॉइड क्या, हॉरर, क्योंकि फॉर सम टाइम्स it scenes of horror may appear good, but ultimately, ठीक है, they fail to grip the attention of the people. भूतहा फिल्म कम लोग देखते हैं, ठीक है। भूतहा फिल्म का कुछ ट्रेंड आवेगा फिर गायब हो जाएगा। क्यों? बिकॉज मेनी पीपल डिसलाइक हॉरर, ठीक है। बहुत दिन के बाद कोई हॉरिबल फिल्म आई तो वो क्लिक कर जाती है, लेकिन ऑल द टाइम हॉरर फिल्म्स और ड्रामाज आर नॉट लाइक्ड बाय मेनी पीपल, ठीक है। डिकोरम कहता है, ठीक है, डिकोरम मतलब ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर। अब बजरंग बली हैं तो गदा और क्या क्या उनके साथ होना चाहिए। उसी ढंग से रावण है तो उसका 10 गो मुंह रहता है तो ज्यादा भयानक दिखता है। उसी प्रकार से हम लोग के यहाँ विलेन है, मोगाम्बो खुश हो गया, होता है ना जी। तो उसका उसका क्या है, कैरेक्टर है, अलग टाइप का है, तो उसको डेकोरेट किया जाता है, स्टेज को डेकोरेट किया जाता है, टिपिकल कैरेक्टर से उसको डेकोरेट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज क्या है, डिकोरम इज एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है ना, ऑफ ए ड्रामा, एंड इट क्रिएट्स क्या, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अब डिकोरम नहीं रहेगा तो स्टेज खराब लगेगा। अब मान लिया जाए कि शमशान घाट में आप रोमांटिक सीन बनाइएगा तो चलेगा? रोमांटिक सीन के लिए गार्डन चाहिए, पिकनिक का स्पॉट चाहिए, और कोई डेड आदमी है तो उसको गार्डन में दफनाइएगा? नहीं, ठीक है। तो एवरी डिकोरम, अब मैरिज है तो मैरिज के लिए जो डिकोरम चाहिए, ठीक है, इट शुड बी मेंटेन। अगर वो नहीं होता है तो फिर गड़बड़ है। अब शादी है तो जरा धूमधाम से होनी है, सीन अगर रोमांटिक है तो इट शुड बी हाईली डिकोरेटेड, क्लियर ना। तो व्हेन एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है, they come together, the scene is different. When Olivia and Viola come together, the scene is different, clear ना। तो in this way, ठीक है, decorum creates surprise and wonder for the audience and spectators। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसलिए क्या है कि ये सारी चीजें आपके जेहन में होनी चाहिए, और जो है ड्रामा में भी ये दिखना चाहिए। ओनली देन क्या, ड्रामाज, गुड ड्रामाज, अट्रैक्टिव ड्रामाज, पॉपुलर ड्रामाज कैन बी क्रिएटेड। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर हुम, फॉर द ड्रामेटिस्ट, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ऑब्जर्व दीज थिंग्स, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड बाय होरेस, प्रेस्क्राइब्ड बाय लोंजाइनस, प्रेस्क्राइब्ड बाय एरिस्टोटल एंड प्लेटो, ठीक है। तो हम मॉडर्न जब ड्रामा में आएंगे तो ये सब नजर कम आएगा, बट स्टिल द स्टेज डायरेक्शन, यूनिटीज, ठीक है ना, कैरेक्टर्स, ठीक है, तो दीज थिंग्स ऑलवेज कम। हाउएवर इन मॉडर्न एज, ठीक है, वी हैव लिमिटेड interest of the readers to read dramas or to see things on a stage, ठीक है। in modern age we see novel writing replacing dramas, but in classical ages
in Shakespearean ages, in Renaissance, ठीक है, we see great interest, ठीक है ना, great popularity of English dramas or dramas in any language. तो ये हो गया। फिर कहता है क्या कि अब कहता है कि पोएट्स जो हैं, ठीक है, और ड्रामेटिस्ट हैं, हमारे यहाँ 2-3 टाइप की राइटिंग है, ठीक है। किसी को ट्रेजेडी पसंद है, किसी को हॉरर ड्रामा पसंद है, किसी को कॉमेडी, किसी को हिस्टोरिकल प्ले पसंद है, ठीक है, किसी को पोएट्री पसंद है, क्लियर ना। और सब अलग अलग लोग लिखने वाले हैं। तो ये Horace thinks that any poet or any dramatist, ठीक है, he or she should select things according to his choice, according to his likings, okay? And he or she should do things according to his capacity, ठीक है। And affectation marks the way of good creation, ठीक है। पर्पल पैजेज और रेडिकुलस एक्टिविटी और इनकॉन्ग्रुअस एक्ट्स एंड इनकॉन्ग्रुअस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ थिंग्स डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ ड्रामा और एनी लिटरेरी थिंग, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ नेगेटिविटी, एंड while writing things, dramatists or poets should avoid all these things, ठीक है। So Horace gave a good turn, ठीक है, to literary taste by maintaining certain classical rules, ठीक है। And for centuries it was observed that Aristotle was surpassed on point by Horace, and he has been addressed Horace has been addressed as a Latin genius, ठीक है ना, और Latin version of Aristotle, ठीक ना। So it is very difficult to be unmindful about the contribution of Horace as a literary critic. Clear हुआ? Yes, sir. चलो अब हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, ठीक है। सर पर्पल Okay, sir. पैसेज क्या होता है? क्या पर्पल पैसेज तो बताया ना, इनकॉन्ग्रुअस। पर्पल पैसेज का मतलब इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। ठीक, ओके।